हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। देखो लास्ट लेक्चर पर्यंत आम कौन करते, लास्ट लेक्चर पर्यंत आम एलपीपी स्टार्ट कर देथिले और स्टार्ट करके तार 3.a या 3a एक्सरसाइज रो जो वर्ड प्रॉब्लम गुडा थिला से वर्ड प्रॉब्लम को केमती आमे एलपीपी फॉर्म रे लिखिबा, एलपीपी को फॉर्म रे केमती फॉर्मुलेट करबा सेटा हम सिखथिले। नाउ आज रो लेक्चर हम कोन सिखबा कि गोटे एलपीपी गिवन अछि हम one LPP will be given. Say LPP ram maximum or minimum value केमती बाहर करिए. How do you find the maximum value and minimum value of a function? By using graphical method. By using graphical method. Graphical method को use करके गोटे LPP रा maximum और minimum value हमें केमती find करेगा सेटा आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? अब एथरे मुझे एमती कहली एथरे जेई रे को क्वेश्चन एथरे आसुनी, सो ए चैप्टर पर यार जेई लेक्चर आसीबोनी तम तो नेक्स्ट चैप्टर करबा मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से गुडा जेई लेक्चर आसीबो। जदि मो चैनल रो नुआ थिबे चैनल डा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। मु जेमति कहू सब एल एंड एस स्क्वायर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। सब मैथमेटिक्स फॉर्म रा पढिबा आ एटा सरला परे हम कोन कर नेक्स्ट चैप्टर को जिबा यार जेई लेक्चर आसीबो। आ जदि आपण माने आईटीएफ रो माने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड तार पूर्व हम गोटे चैप्टर करथिले सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस से जो चैप्टर जदि आपण देखि ना कोन जेई लेक्चर देखि ना जेई लेक्चर देखुन वाई बिकॉज़ जेई पई हमर पोर्शन सरला परे जेई लेक्चर पई हम पढिया पे अधिक टाइम नथि। तो फर्स्ट अटेम्प्ट हमर जेईडा ए वर्ष कोरोना अफेक्टेड किछ नै, तो जनवरी सेकंड वीक जान रो सेकंड वीक रे हेबार संभावना अछि। सेकंड और थर्ड वीक मोस्ट प्रोबेबली सेकंड और थर्ड, किंतु जदि मो एक्सपीरियंस करी मो सेकंड वीक रे सेडा है। तो सेकंड वीक पर्यंत एटलीस्ट आमु पाखरे एते समय नै, खाली रिवीजन करियो समय मिलियो। ठीक अछि, नवंबर हे जो हमर पोर्शन सरला पर हम पोर्शन सरला वी आर इन सच ए पोजीशन टू नो कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड पोर्शन। तो जेति 12th स्टैंडर्ड पोर्शन हम पढि जा तार के को टाइप रो क्वेश्चन आसीओ सेटा हम जान दे परिबे। अब साइमल्टेनियसली मो 11th स्टैंडर्ड रो लेक्चर स्टार्ट करी 11th स्टैंडर्ड चैप्टर रे आपण जदि न भी देखबे 11th सरी जाय देखबेनी तो तार जेई लेक्चर गुडा देखियो चेष्टा करियो। जेमति हमें 19 रो 20 रो 21 रो जेई लेक्चर करछे सेमति जेई लेक्चर गुडा देखियो चेष्टा करो, सो दैट 11th रो जेई और 12th रो जेई तमर साइमल्टेनियसली प्रिपेयर हेकी चली। ठीक अछि, आ जेमति हमर पोर्शन सरी जिवो सेमति जेई भी सरी जायथियो तापर हम जेई रो रेगुलर कोर्स स्टार्ट करो। रेगुलर कोर्स माने रिवीजन सीरीज जेई लेक्चर पूर्व हम गोटे प्लानिंग करियो, गोटे प्रोग्राम करियो। हम प्रोग्राम करियो हम कोन करियो हमर कम्युनिटी रे पकै दु से अनुसार हम लेक्चर अपलोड करियो। ठीक अछि, तो हम टीम चल जन से अनुसार काम करियो। आ या सहित 8th 9th एंड 10th 8th 9th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड यार हम फाउंडेशन लेक्चर प्लान करू। फाउंडेशन माने 8th पिला मन पय 9th पिला मन पय और 10th पिला मन जो माने आगु जाय कि जेई या नीट प्रिपेयर करिए सेही पिला मन पय मैथमेटिक्स रो किछि फंडामेंटल जिंस जोडा दरकार पड़ियो। डायरेक्टली हम 11th स्टैंडर्ड गले जो प्रॉब्लम गुडा फेस करछे से आर तार पय हम गोटे शॉर्टकट व्यवहार करछु। ते 8th स्टैंडर्ड पोर्शन सहित से माने कोन कर फाउंडेशन लेक्चर देखि 9th सहित फाउंडेशन देख पारे, 10th सहित फाउंडेशन देख पारे, सो दैट द थिंग्स विल बी इजियर व्हेन दे विल गो टू 11th और 12th स्टैंडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर जेई एंड नीट। ठीक है, तो हमें जीवा स्टार्ट करिया हमर आज लेक्चर। कोन लेक्चर आज पढिबा हमें हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। प्रथम हम देखतो ग्राफिकल मेथड पे स्टेप्स कोन अछि आ से स्टेप्स यूज करी हाउ डू यू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन व्हिच इज द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। द वर्किंग प्रोसीजर टू सॉल्व एलपी एटा होचे स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप कोन अछि टेकिंग ऑल द इनइक्वेशंस एज इक्वेशंस। जति कि इनइक्वेशन मतलब लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू सब को हम इक्वल टू कंसीडर कर दबा। आ इक्वल टू कंसीडर कला पर से कोन बनी गोटे स्ट्रेट लाइन बन दियो। कोन बन दियो स्ट्रेट लाइन एंड ड्रॉ दोस स्ट्रेट लाइंस इन 2 डायमेंशनल प्लेस। से स्ट्रेट लाइन गुडा हम 2D प्लेन रे बना दबा माने x एक्सिस y एक्सिस बने से स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ कर दबा। ड्रॉ कला पर इनइक्वालिटी रो साइन देखिबा। Considering the inequalities, the constraint inequations complete the feasibility. देखिबा जदि लेस देन इक्वल टू अछि the region will be towards the origin माने origin साइड रहबो। जदि ग्रेटर देन इक्वल टू अछि the region will be away from the origin. Determine the vertices of the feasible region. Feasible region जो extreme point अछि corner points अछि सेउडा बाहर कर by inspection by solving the two equations intersecting line।
केते गुडा कोन गोटे पॉइंट जदि एक्स एक्सिस ऊपर तो डायरेक्ट मिल गेला काहे एक्स एक्सिस ऊपर जो पॉइंट रहबो तार y कोऑर्डिनेट 0 हो आउ जदि गोटे पॉइंट y एक्सिस ऊपर अछि तार x कोऑर्डिनेट 0 हो आउ जदि इंटरमीडिएट वैल्यू कोडा अछि दुईटा लाइन रो इंटरसेक्शन अछि से दुईटा लाइन रो इक्वेशन का हम करबा साइमल्टेनियसली सॉल्व करी पॉइंट को बाहर करबा तो फर्स्ट स्टेप हम कोन करे ड्रॉ ऑल दोज इन इक्वेशंस एज इक्वेशंस कंसीडर करबा जेति के इन इक्वेशन अछि सब के इक्वेशन कंसीडर करबा आ से गुडा स्ट्रेट लाइन बनबा स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट पुट करिया आ पॉइंट गुडा हम टू डायमेंशनल प्लेन में प्लॉट करिके स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करबा राइट ड्रॉ कला पर इनइक्वालिटी रो साइन देखबा लेस देन जदी अछि टुवर्ड्स द ओरिजिन हुए जनरली ग्रेटर देन थिले अवे फ्रॉम द ओरिजिन हेगला तापर फिजिबल रीजन फाइंड करे फिजिबल रीजन मतलब द रीजन इन व्हिच x एंड y बोथ आर पॉजिटिव हेगला तापर एक्सट्रीम पॉइंट बाहर करे फिजिबल रीजन जो कॉर्नर पॉइंट अछि या एक्सट्रीम पॉइंट अछि तार कोऑर्डिनेट बाहर करे स्टेप 3 कोऑर्डिनेट बाहर कला परे इवैल्यूएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन अछि z एट ईच वर्टेक्स जेति के हमें कॉर्नर पॉइंट बाहर करथिया सब कॉर्नर पॉइंट हमें z रो वैल्यू को कैलकुलेट करी एठी जो z रो वैल्यू हमें कैलकुलेट करे एटा रो दी केस अछि जदि फिजिबल रीजन बाउंडेड अछि द वर्टेक्स व्हिच गिव द ऑप्टिमम सॉल्यूशन और z गिव्स द डिजायर्ड ऑप्टिमम सॉल्यूशन किछ करिया नै तामझाम किछ नै डायरेक्ट पॉइंट गुडा जेतल सब्स्टिट्यूट कर दो जो वैल्यू तमर ऑप्टिमम आछला इधर मैक्सिमम आछला और मिनिमम आछला सेटा हमर फाइनल आंसर इफ द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड जदि फिजिबल रीजन ता कोन अछि बाउंडेड अछि आ जदि फिजिबल रीजन ता अनबाउंडेड अछि फिजिबल रीजन अछि अनबाउंडेड देन m इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z जदि कैपिटल m द मैक्सिमम वैल्यू हेतियो देन हमें कोन करिया से कैपिटल m ता को ax by ग्रेटर देन m करिया ax by कोन z एटा ग्रेटर देन m करिया हमें गोटे लाइन टी ड्रॉ करिया से हाफ पोर्शन रे से लाइन दा कोन करियो टू डायमेंशनल पे दुईटा हाफ रे डिवाइड कर दो सेही हाफ पोर्शन रे जदि फिजिबल रीजन इंक्लूड होउची फिजिबल रीजन रो किछि पार्ट इंक्लूड होउची ताहेले मैक्सिमम वैल्यू एक्जिस्ट करिवो नाही मैक्सिमम वैल्यू एक्जिस्ट करिवो नाही जदि फिजिबल रीजन रो को भी पार्ट इफ नो पार्ट ऑफ द फिजिबल रीजन लाइज ऑन z ग्रेटर देन m z ग्रेटर देन m रे जदि को भी फिजिबल रीजन नै देन मैक्सिमम वैल्यू एक्जिस्ट करिवो आ मिनिमम वैल्यू पय में सेमथि मिनिमम वैल्यू तो देखो अनबाउंडेड रीजन है मिनिमम वैल्यू पे किछ करिवार नै इफ इवन दो द रीजन इज अनबाउंडेड मिनिमम वैल्यू सब बेले गोटे हो यूनिक वैल्यू ता पे किछ करिवो जदि मैक्सिमम बचारला त हम कोन करिया z को पास करी गोटे लाइन डी बनेबा आ मिनिमम जो छै छ मैक्सिमम सेट अछि से दुईटा पॉइंट रे z इक्वल टू 0 को पैरेलल करी दुईटा लाइन बनेबा देखिबा से हाफ प्लेन को कंटेन करछि कि फिजिबल रीजन ता जदि कंटेन कला देन मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एक्जिस्ट जदि कंटेन न कला सेटा होछ हमर मैक्सिमम वैल्यू गोटे क्वेश्चन करिया सब डिस्कशन करिया ठीक अछि जहां जहां हम स्टेप्स देखले क्वेश्चन थ्रू डिस्कशन करिया क्वेश्चन नंबर 1 डिटरमाइन ओपन हाफ प्लेन एटा नोट ता जोडा मु एक्सप्लेन कर दिले ऑलरेडी हां v मैक्सिमम v मिनिमम केतेला हो चल क्वेश्चन नंबर 1 देखो कोन देछ सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली हां देखो फर्स्ट स्टेप मु कोन कहथि फर्स्ट स्टेप रे हम कोन करबा फर्स्ट स्टेप रे हम कंसीडर ऑल द इनइक्वेशंस एज इक्वेशंस consider all the inequations as equations equation consider कर दो तो फर्स्ट लाइन टा कोन हेगला देखो 2 times x1 plus 3 times x2 is equal to 6 एटा हम कंसीडर कर दे पॉइंट्स केमती बाहर करबे देखो पॉइंट्स पाए हम गोटे बॉक्स बना देबा और हम एमती करबा जदी x1 x2 को हम x1 टा को हम 0 कर x1 टा को 0 करले सेठी x2 केता आसीओ देखो x2 आसीला देखो x1 टा को 0 कर देले 3x2 हेगला 6 तो x2 हेगला 2 सिमिलरली x2 टा को 0 करले x2 टा को जदी 0 करिया तो 2x1 = 6 तो x1 = 3 तो पॉइंट्स कोन कोन आसीला देखो पॉइंट आसीला when x1 is 0 x2 is 2 and when x2 is 0 x1 is 3 डेटा पॉइंट आसीला दुईटा पॉइंट आ ए दुईटा पॉइंट का हम टू डायमेंशन कोई गोटे आगे स्ट्रेट लाइन अछि देखो एठी ध्यान रे गोटे आगे इनइक्वालिटी अछि आउ नै थिले हम आगु करतांते किंतु एठी गोटे कंडीशन दै छै हम पर देखा अब एठी कोन इनइक्वालिटी रो साइन कोन दै छै लेस देन इक्वल टू माने ओरिजिन भितर को रह ओरिजिन ता यार भितर को रह जतले 0 0 पुट करबो देखो लेस देन आछी 0 0 पुट करले 0 आउची लेस देन 6 माने ओरिजिन साइड रह को साइड रहो ओरिजिन साइड रह तो हम ग्राफ बनेबा को पॉइंट रहो 0,2 आउ 3,0
कौन कौन पॉइंट 0,2 एंड 3,0 ये 1 ये 2 ये 1 ये 2 और ये 3 1 2 एंड ठीक अच्छे 3,0 हेगला गोटे पॉइंट 0,2 हेगला गोटे पॉइंट कंसीडर दिस पॉइंट एज ए एंड दिस पॉइंट एज ए पॉइंट ऑफ ए कर देला और ए पॉइंट ऑफ बी और गोटे स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दबा पासिंग थ्रू ए एंड बी अब देखो लेस देन इक्वल टू अच्छे लेस देन इक्वल टू माने रीजन टा हबो टुवर्ड्स द ओरिजिन बट हबो टुवर्ड्स द ओरिजिन माने लाइन तळ लाइन को टच करी तळ अब x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 x ग्रेटर देन 0 मतलब x इक्वल टू 0 कोन होची y एक्सिस ग्रेटर देन 0 माने y रो राइट साइड और x एक्सिस रो ऊपर को x एक्सिस राइट साइड माने पॉजिटिव रीजन सो दिस इज योर फिजिबल रीजन सो दिस पॉइंट इज 0,0 नाउ एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन कोन कोन हला गोटे पॉइंट दुईटा का एक्सट्रीम पॉइंट रहला गोटे एक्सट्रीम पॉइंट हेगला a व्हिच इज 3,0 आ गोटे एक्सट्रीम पॉइंट हेगला b दैट इज 0,2 तो देखो फिजिबल रीजन हेगला a गोटे पॉइंट a पॉइंट ता कोन कहली मु 3,0 एंड जो b पॉइंट ता कहली दैट इज 0,2 तो हमें z रो वैल्यू बाहर करबे देयरफॉर since z is equal to z कौन दिखला z is equal to 5x1 plus 6x2 एटा z थिला ना z रो हम वैल्यू बाहर करियो ओ वैल्यू बाहर करियो z at a therefore z at a और a रो कोऑर्डिनेट कौन अछि a रो कोऑर्डिनेट अछि 3,0 so therefore z is equal to 5 into 3 plus 6 into 0 तो 5 into 3 कौन हेगला 15 6 into 0 हेगला 0 15 plus 0 will be equal to 15 एटा हेगला z ठीक আছে similarly z at b माने 0,2 तो z is equal to 5 into 0 plus 6 into 2 तो this will be equal to 12 तो हेगला फाइनल आंसर लिख दो फाइनल आंसर कोन अछि देखो फाइनल आंसर अछि z मिनिमम z मैक्सिमम मैक्सिमाइज करला ना z maximum is equal to 12 at x is equal to 0 and y is equal to 2 एटा हेगला तमरो z रो मैक्सिमम वैल्यू बुझिला पिला ने बुझिला केमति करा होची एमति करा होची बस है ना आगे कोन करले हम इन इक्वेशन टा को इक्वेशन कंसीडर करला पर ये गोटे बनि गेला स्ट्रेट लाइन ए स्ट्रेट लाइन रे दुईटा पॉइंट नेला मिनिमम दुईटा पॉइंट x को 0 कले y मिलला y को 0 कले माने x1 को 0 कले y मिलला y1 को 0 कले x मिलला अब एटा होची तमरा x1 एक्सिस अब एटा होची तमरा x2 एक्सिस एटे x1 x2 अछि जनरली हमरो टू डायमेंशनल प्लेन रे कोन रहे x एंड y रहे एटे x1 x2 अछि हां तापर दुईटा ही पॉइंट थिला काइना गोटे आगे स्ट्रेट लाइन अछि तो ओनली दुईटा पॉइंट थिला सो दुईटा पॉइंट हम बाहर कर आ दुईटा जाको कॉर्नर पॉइंट जति भी कॉर्नर पॉइंट आछो एट ईच एंड एवरी कॉर्नर पॉइंट फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z तो z रो गोटे वैल्यू आसी गला 15 आ गोटे वैल्यू आसी गला 12 गोटे वैल्यू आसी गला 15 आ गोटे वैल्यू आसी गला 12 तो z रो मैक्सिमम वैल्यू रॉन्ग लिख दो नहीं z रो मैक्सिमम वैल्यू कते हेगला z रो मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 15 z maximum is equal to 15 at x1 is equal to 3 and x2 is equal to 0 at 3,0 एटा हेगला तमरा फाइनल आंसर बुझ गेला तो ये हेगला आंसर तो एमती हमें क्वेश्चन सॉल्व करिया देखियो आगो क्वेश्चन चलो ये क्वेश्चन 2 minimize z equal to 6x1 plus 7x2 subject to x1 plus 2x2 greater than equal to 4 तो फर्स्ट स्टेप कौन करिया कंसीडर all the inequations एट तो गोटे आगा छै किंतु लिखि दियो all the inequations as equations तो फर्स्ट इक्वेशन है गला x1 plus 2 times x2 is equal to 4 पॉइंट्स पे कौन करिया पॉइंट्स पे आगे हम x2 को 0 करिया जतो x2 को 0 करिया एटा 0 है गला तो x1 है गला 4 x2 जगह इक्वेशन रो 0 पुट कर दो तो x1 है गला 4 एंड जतो x1 को 0 करिया x1 को 0 कर दे
तो 2x2 इक्वल टू 4 कौन है 2x2 इज 4 तो x2 इज इक्वल टू 2 2x2 4 माने x2 इक्वल टू 2 हेगला पॉइंट गोटे पॉइंट दुईटा पॉइंट मिलला 4,0 एंड 0,2 याकू नै कि हम ग्राफ बने ग्राफ बनेबा ए दुईटा पॉइंट रे हम z रो वैल्यू बाहर चलो ग्राफ टा बनेबा आ इनइक्वालिटी रो साइन टा देखि के रखतो इनइक्वालिटी रो साइन होचे ग्रेटर देन इक्वल टू पॉइंट कोन कोन होला पॉइंट हेगला 4,0 एंड 0,2 सो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ नाउ एबे कोन करबा हम ग्राफ टा को ड्रॉ करबा जिबा एटा हेगला x1 एक्सिस एटा हेगला x2 एक्सिस पॉइंट्स आर 4,0 लेट 4,0 एठी अछि हला एठी हेगला 4 और 0,2 माने एठी हेगला 2 ए दुईटा लाइन को ए दुईटा को हमें जॉइन कर दवा ठीक अछि एटा होछि लाइन इनइक्वालिटी कोन अछि ग्रेटर देन इक्वल माने रीजन कोठी हबो द रीजन विल बी हियर ए जो एठी रीजन चलो ग्राफ बन गला ग्राफ को देखो ए पॉइंट ता रीजन इट अनबाउंडेड अछि देखो रीजन ता बाहर को अछि ना अनबाउंडेड बाहर को अनबाउंडेड किंतु हमकु मिनिमम वैल्यू पछारछि सेति हमकु आ किछ करबा दरकार नै जदी एठी मैक्सिमम वैल्यू पछारथांदा तो एठी हम z रे कोटे लाइन ड्रॉ करथांते z इक्वल टू 0 वाला जो पॉइंट ता मिनिमम अछि सेठी कोटे पैरेलल लाइन जे देखो z को मु एठी कोटे लाइन ड्रॉ कर दिली सो लाइन टाइम ति रह मिनिमम वैल्यू देखबा कोठी होछि मिनिमम वैल्यू सेठी लाइन ता जदी ड्रॉ करबी z को पैरेलल करबी z को पैरेलल करबी सेही लाइन रो जो पोर्शन रहिबो से लाइन रो लेस देन इक्वल टू पोर्शन रे या से लाइन रो ग्रेटर देन इक्वल टू पोर्शन रे जदी फिजिबल रीजन रो को पोर्शन आसिला देन सेटा मिनिमम वैल्यू होबन किंतु जेहेतु मिनिमम वैल्यू पचारछि क्वेश्चन हम किछि करबा दरकार नै हां ए दुईटा पॉइंट को नेकिबा हम z रे सब्स्टिट्यूट कर दबा आ से जो आंसर आसको मिनिमम वैल्यू सेठी हमर फाइनल आंसर हे दियो ठीक अछि तो हे गेला since z is equal to z कोन थिला देखो since z equal to 6x1 plus 7x2 तो z at a point of a कह दी कलर बदल दो a point of a कह दो a point of b कह दो तो z at a which is 4,0 z at a which is 4,0 is z equal to 6 into 4 plus 7 into 0 so 6 4 is 24 7 into 0 will be 0 so answer is 24 similarly z at b which is your 0,2 so this is z is equal to 6 into 0 plus 7 into 2 so 6 into 0 will be 0 7 into 2 will be 14 तो 0 plus 14 will be equal to 14 ठीक अछि तो हमको z मिनिमम पचारते सो z मिनिमम केते हेगला 14 हेगला तो फाइनल आंसर लिख देबा हम एठी कोन लिखबा देखो z मिनिमम equal to 14 at x1 is equal to 0 and y1 is equal to and x2 equal to not y1 it is x2 x2 equal to 2 एटा हेला तुम्हारा फाइनल आंसर बुझियला सेम प्रोसीजर सब क्वेश्चन पे कर अजिबा एबे थर्ड क्वेश्चन एठी दुईटा इनइक्वालिटी আছে ध्यान तो देखो दिस इज वन इनइक्वालिटी एंड दिस इज द अदर वन तो एठी गोटे इनइक्वालिटी अछि और एठी गोटे इनइक्वालिटी अछि आगे कोन करिया same method consider all the inequations as equations consider all the inequations as equations जति की इनइक्वेशन है सब इक्वेशन बनबा तो प्रथम एक कोन आसला x1 plus x2 is equal to 1 गोटे स्ट्रेट लाइन हेगला और सेकंड आसला 6x1 plus 2x2 equal to 3 so let this will be equation 1 and this will be your equation number 2 या पई पॉइंट्स कोन आसीयो फर्स्ट पई पॉइंट आसला
जदि x2 को 0 कले तो x1 इज इक्वल टू 1 इक्वेशन रे x2 जगह रे 0 सब्स्टिट्यूट कर दो तो x1 आसला एंड x1 को 0 कले x2 आसला 1 ठीक अछि आ सेकंड इक्वेशन पे पॉइंट्स x2 को 0 कले 6x1 इक्वल टू 3 तो x1 इक्वल टू 3/6 माने 1/2 0 एंड या को 0 करिया x1 को 0 कले x2 विल बी इक्वल टू 3/2 तो 1/2 0 3/2 चारटा पॉइंट पळासला गोटे हला 1 0 0 1 आ गोटे हला 1/2 0 एंड 0 3/2 तो ग्राफ ड्रा करबा हम ये 1 ये 1 दिस इज इक्वेशन 1 एटा हला हमर फर्स्ट लाइन दिस इज 2 सो दिस इज 3/2 मतलब 1.5 और 3/2 एटा गोटे पॉइंट आ गोटे पॉइंट हेगला 1/2 माने केते 0.5 1/2 माने 0.5 आ ए दुटा पॉइंट को जॉइन कला बेले आ गोटे हमें लाइन टे ड्रा कर दो ठीक अछि चलो वन मोर लाइन जॉइनिंग दिस टू तो ए पॉइंट हेगला तमरो 1, 0 ए पॉइंट हेगला 0, 1 गुटे दिस पॉइंट इज 0, 3/2 माने केते बेले 1.5 ना आ ए पॉइंट हेगला 0.5 माने 1/2 0 दिस इज 1/2 0 these are the points तो हेगला लाइन और इनइक्वालिटी रो साइन कोन देथिला दुईटा जगह थिला लेस देन इक्वल माने टुवर्ड्स द ओरिजिन तो यार लेस देन इक्वल टू और यार भी लेस देन इक्वल हेगला x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर तो ए हेगला तुम्हारा फिजिबल रीजन को रीजन हेगला एटा फिजिबल रीजन आ फिजिबल रीजन कॉर्नर पॉइंट कोटा दिस इज वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट एटा हेगला आ गोटे कॉर्नर पॉइंट एटा हेगला आ गोटे कॉर्नर पॉइंट ए तीनटा कॉर्नर पॉइंट रा हमको कोऑर्डिनेट बाहर करबो पड़ी ठीक अछि दुईटा x एक्सिस गोटे x एक्सिस x1 ऊपर अछि आ गोटे x2 ऊपर अछि ह गोटे x1 ऊपर अछि आ गोटे कोठी अछि x2 ऊपर अछि ए पॉइंट ता पई हम देखिबा कोन करबा ठीक अछि देखो एटा हेगला हमर ग्राफ सो फिजिबल एक्सट्रीम पॉइंट्स देखिबा हम द एक्सट्रीम पॉइंट्स और कॉर्नर पॉइंट्स extreme points of the feasible region are extreme points of the feasible region are गोटे पॉइंट हेगला एटा है कि ए पॉइंट हेगला ए वाला पॉइंट केते अछि देखो 1/2 0 A is 1/2, 0. B is B माने 0, 1. And for C solving equation 1 and 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो ताले कोन हो देखो दिस इज द पॉइंट सी एटा दुईटा लाइन रे इंटरसेक्शन दुईटा लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करिया माने ए लाइन और ए लाइन देखो एटी x1 x2 अछि ना एटी 2x2 अछि नै कि इक्वेशन 1 टा को 2 रे मल्टीप्लाई कर दो सो इक्वेशन 1 into 2 इक्वेशन 1 कोन थिला हमर x1 + x2 = 1 तो 2 रे मल्टीप्लाई करले 2x1 plus 2x2 and this is equal to 2. Now equation 2 into 1. Equation 2 को 1 रे मल्टीप्लाई कर दो 2 टा कोन थिला
6x1 plus 2x2 is equal to 6x1 plus 2x2 equal to 3. अब माइनस कर दिए, माइनस 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 2x2 कैंसिल हो गया, 2x1 minus 6x1 is minus 4x1 and this is equal to 2 minus 3 is minus 1. So x1 is equal to 1 by 4. Now using this in equation 1. What was equation 1? x1 plus x2 is 1. So x1 जगह 1 by 4 plus x2 and that is equal to 1. So x2 is equal to 1 minus 1 by 4 which is equal to 3 by 4. So point कौन आसिला? C रो कोऑर्डिनेट आसीगला 1, 3 by 4. 1, 3 by 4. Now, since z is equal to कौन थिला देखियो ठीक 20x1 plus 40x2. Z equal to 20x1 plus 40x2. So since z equal to 20x1 plus 40x2, z at a. देखिए ठीक है, a रो कोऑर्डिनेट कौन होची? a is half comma 0. a is 1 by 2 comma 0 ना, तो a is 1 by 2 comma 0 is z equal to 20 into 1 by 2 plus 40 into 0. So 20 into 1 by 2 is 10. 2 रे कैंसिल कर लेटा 10 है गला, एटा 0. 10 plus 0 will be equal to 10. Similarly, z at b and b is b coordinate करते थे 0, 1. 0, 1 is z equal to 20 into 0 plus 40 into 1 and the answer is 40. Similarly, z at c. c रो कोऑर्डिनेट करते अच्छे देखो 1, 3 by 4. 1, 3 by 4 is z is equal to 20 into 1 plus 40 into 3 by 4. So 4 cancel कर लेटा है गला 10. 20 into 1 will be 20 plus 10 into 3 will be 30. So z is equal to 20 plus 10 into 3 which is 30 and that is equal to 50. कौन पचास देखो 3टा z रो वैल्यू आसला, मिनिमम की मैक्सिमम पचास, मैक्सिमाइज z. हाँ, so z maximum is equal to 50 at x1 is equal to 1 and x2 is equal to 3 by 4. Wait. x1 is 1 by 4. है ना? So this is 1 by 4. तो 1 by 4 माने एटा है गला तुम्हारा एटा है गला 5 plus 30. 5 plus 30 will be equal to 35. So z maximum है गला तुम्हारा 40. आंसर कौन है गला? z maximum is equal to 40 at x1 is equal to 1 by 4 and x2 is equal to 3 by 4. So this is the final answer. बुझिएला समझा? तो ये एटा 1 ही जाइतला ना, एटा 1 by 4 ठीक अछि, एटा 3 by 4. तो एटा होछि तमरो मैक्सिमम वैल्यू. जेबा आगु बढ़िबे फोर्थ क्वेश्चन मैक्सिमाइज एटी भी दीटा इक्वेशन. अच्छा सेम को कंसीडर all the inequations as equations. So which is 2x1 plus 6x2 is equal to 4. तो 2 रे डिवाइड कर दो, 2 रे डिवाइड कर दो, x1 plus 3x2 is equal to 2. Let it be equation number 1. पॉइंट्स कौन कौन होगा? जदि x2 को 0 कर ले माने x1 equal to 2 and जदि x1 को 0 कर ले x2 is equal to 2 by 3. x2 को 0 कर ले x1 है 2 and x1 को 0 कर दे x2 है 2 by 3. प्रथम लाइन पे पॉइंट पड़ा आसला. एंड व्हाट इज द सेकंड लाइन? सेकंड लाइन अछि आपनकर 5x1 plus 2x2 this is equal to 5 and this will be your equation number 2.
पॉइंट्स कहता है वो x2 को 0 कर ले, x1 is 1 and x1 को 0 कर ले, x2 will be 5/2. 5/2 माने 2.5. Two comma 0. This is 1. This is 2. This is 1 and this is 2. 2 comma 0. 2 comma 0 माने 8 point. 0 comma 2/3. 2/3 माने कहते बोले 2/3. 2/3 माने 0.6. 8 कोटी होगा 2/3. 0.6. एटा 0 अछि. 0 1 रो भितरे 0.6. ए दुईटा को जॉइन कर देले गोटे लाइन रे आसीउ. This is equation number 1. 1 comma 0. 1 comma 0 माने 8 point. 0 comma 5/2. 5/2 माने 2.5. 5/2 माने 2.5 माने 2 पर. This is 5/2. ठीक अछि. आउ या को जॉइन कर दबा आ गोटे लाइन रे. This is your equation number 2. This is your equation number 2. ठीक अछि. आउ फिजिबल रीजन कोठी अछि. फिजिबल रीजन अछि आपनकर आउटसाइड. फिजिबल रीजन कोठी अछि आउटसाइड. दुटा जा ग्रेटर देन अछि ना. देखि देबा टिके. दुटा जा देखो एठी भी ग्रेटर देन अछि और एठी भी ग्रेटर देन अछि. ग्रेटर देन थिले कोन हो आउटसाइड. तो ग्रेटर द फिजिबल रीजन विल बी दिस. मिनिमम पचार किछ करे दरकार नहीं. गोटे पॉइंट हेगला ए. ए पॉइंट को ए कर दियो 2 comma 0. गोटे पॉइंट हेगला एटा को बी कर दियो. This point is your B. 0 comma 5/2. This point is your C. A point टाइम कैलकुलेट करियो बट केमति कैलकुलेट करिवा. इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करबा. ठीक अछि. सो एबे कम करिवा सब एक्सट्रीम पॉइंट. So the extreme points of the feasible region are extreme points of the feasible region are feasible region extreme point है A. One is your A 2 comma 0. Other one is B 0 comma 5/2 and for C solving equation 1 and 2 simultaneously. That is equation 1 is x1 plus 3x2 equal to 2 and 5x1. तो equation 1 को हमें 5 रे मल्टीप्लाई करिए. Equation 1 multiply by 5 and that equal to 5 रे मल्टीप्लाई x 5x1 plus 15x2 equal to 10. 5x1 plus 15x2 and this is equal to 10 and equation 2 को as it is रखता है. किस करियन काइन ना सेठी ऑलरेडी 5x1 अछि. 5x1 plus 2x2 equal to 5. So this is 5x1 plus 2x2 and this is equal to 5. माइनस कर देले माइनस माइनस माइनस. 5x1 cancel. 15 minus 2 will be 13x2 equal to 10 minus 5 will be 5. So x2 will be equal to 5/13. Now using in equation 1. Equation 1 कौन थिला हमरो x1 plus 3 into x2. x2 माने 5/13 and this is equal to 2. एमते थिला. So this is equal to x1 plus 5 into 3 will be 15/13 is equal to 2. So this is x1 will be equal to 2 minus 15/13. 13 into 2 will be 26. 26 minus 15/13
and this is equal to 11 upon 13. So eta है हमारा C and the coordinates are x1 is 11 upon 13 and x2 is 5 upon 13. Now z बाहर करिए. Since z is equal to z कौन से देखे थे ठीक है. चलो 30x1 plus 45x2. So this is nothing but 30x1 plus 45x2. So z at a. Z at a and a is nothing but your 2, 0. Correct ना? चलो देखो a is 2, 0. A is 2, 0. Therefore, z is equal to 30 into 2 plus 45 into 0. 30 into 2 will be 60. 45 into 0 will be 0. So this is 60. Similarly, z at b and b is 0, 5 by 2. B is 0, 5 upon 2. So therefore z equal to 30 into 0. 30 into 0 plus 45 into 5 divided by 2. 45 into 5 will be 225. So this is 225 divided by 2 is equal to 112.5. 112.5. Similarly, z at the C, which is 11 upon 13 and 5 upon 13. So this is 30. Therefore, z equal to 30 into 11 upon 13 plus 45 into 5 upon 13. So z at C equal to 30 into 11. 330 divided by 13. 45 into 5 will be 225 divided by 13. So 225, 300. 555 divided by 13. तो कौन पचार थिला हमको मिनिमाइज सब तो मिनिमम वैल्यू 13 रे डिवाइड करो. 13 4 जा 52. 52 माने 3. 55 अछि ना 3 रहला 3 and 5 35. 35 माने 13 2. तो 42 पॉइंट समथिंग आछे. तो एटा का सेट रो मिनिमम वैल्यू अछि काई ना बाकी सब उडा तो गोटे अछि 220 गोटे अछि 112 225 by 2 माने 112.5 आ गोटे अछि 60. So the minimum value is this z minimum equal to 555 divided by 13. This is the minimum value at x1 is equal to 11 upon 13 and x2 is equal to 5 upon 13. 5 upon 13. बुझे लागले एटा होची हमरो क्वेश्चन 4 का आंसर. ठीक अछि. सेम मेथड सेम खाली एते टी कैलकुलेशन अधिक आसी. बुझी गेला. आगु बुझिबा. क्वेश्चन नंबर 5. एठी तीनटी इक्वेशन अछि. हां तीनटी इक्वेशन अछि. तो देखो मेथड सेम. कंसीडर ऑल द इक्वेशंस एज इक्वेशंस. तो कंसीडर all the inequations as equations. So this is minus 2 times x1 plus x2 is equal to 1. Second one, यहाँ पे पॉइंट्स कंपेयर करिए. पॉइंट्स बाहर करिए. हाँ x2 को 0 करिए माने x1 हेगला -1 by 2 and x1 को 0 करिए x2 हेगला 1. फर्स्ट and second inequation is x1 is equal to 2. यहाँ पे पॉइंट बाहर करिए जरूरत नहीं. कहीं बिकॉज़ it's a line parallel to x1 equal to constant माने it's a line parallel to x2 axis. Then and the third one is x1 plus x2 is equal to 3. Equation 3. This will be your equation 2. Equation 3. 8 points कौन हो? x2 को 0 कर ले x1 हेगला 3 and x1 को 0 कर ले x2 हेगला 3. So these are the points. ठीक है. अभी सब तीनटा जगह लाइन को हमें ग्राफ रे प्लॉट कर दो. हो गया x एंड y एक्सिस.
तो पहले पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन के लिए पॉइंट्स है -1/2, 0 एंड 0, 1। -1/2, 0। सो यहाँ पे -1, तो ये हो जाएगा, ये 0 है, तो ये हो जाएगा -1/2, 0 एंड 0, 1। यहाँ पे अगर 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1, और यहाँ पे लिखेंगे 2। दिस वन इज योर x1 एक्सेस एंड दिस विल बी योर x2 एक्सेस। तो -1/2, 0 एटा गोटे पॉइंट, 0, 1 दिस वन इज अ पॉइंट। नाउ ड्रॉ, ये दुईटा लाइन को जॉइन कर दबा हमें टू गेट द स्ट्रेट लाइन। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो ये है इक्वेशन नंबर 1। दिस इज पैरेलल टू x1 ना, x1 इक्वल टू 2। x1 equal to 2. So this will be your equation number 2. Now the third equation. Third equation to point ala 3, 0 and 0, 3. 3, 0 and 0, 3. माने एक्सिस को एक्सटेंड करियो पड़ियो है ना। 3, 0 एठी हबो और एटा को मते ऊपर उठ के एक्सटेंड करियो पड़ियो। एटा हेगला 0, 3। आ ए दुटा पॉइंट को जॉइन करियो पड़ियो। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। हेगला तीनटा इक्वेशन। अब देखियो फर्स्ट लाइन ता जो अछि इक्वेशन 1 रो तार ग्रेटर देन इक्वल टू अछि कि लेस देन इक्वल टू। तो फर्स्ट लाइन अछि लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू माने टुवर्ड्स द ओरिजिन। ओरिजिन कोठी अछि देखो, ओरिजिन टा यार तळपटे अछि, तो टुवर्ड्स द ओरिजिन ए रीजन टा। ठीक अछि। x ग्रेटर देन 0 माने ए रीजन टा भी हेगला। इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 रे देखो लेस देन अछि, ग्रेटर देन अछि, लेस देन अछि, लेस देन अछि ना। देखो दिस इज x1 इक्वल टू 2, एट होचे x1 लेस देन इक्वल टू 2 माने टुवर्ड्स द ओरिजिन रीजन हबो। एठी भी टुवर्ड्स द ओरिजिन माने एम्प्टी हेगला टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब थर्ड टा देखो, थर्ड रो अछि लेस देन इक्वल टू माने दिस इज आल्सो टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये भी टुवर्ड्स द ओरिजिन हेगला। So this is your feasible region. FR मतलब feasible region. तो extreme points हम देखिए. So this is one of the extreme points. Let us consider A. This is your B. This is your C. And this is your D. And this will be your O. So this is the point A, B, C, D. This is D and O. तो हमको ये सब कॉर्नर पॉइंट रो कोऑर्डिनेट बाहर करियो पड़े। को कॉर्नर पॉइंट A, B, C, D and this. चल A point. The extreme points of the feasible region are extreme points of feasible region are feasible region extreme point कौन कौन है? A is 2, 0, D 0, 1 and for B equation 2 और 3 को सॉल्व करो। देखो B टा को पॉइंट इंटरसेक्शन, B is the intersection of equation 2 and 3। तो 2 और 3 रो इंटरसेक्शन एटा होची B ना। B पॉइंट टा इंटरसेक्शन ऑफ 2 and 3। तो 2 और 3 को सॉल्व कर दो। 2 रे कोन अछि x1 इक्वल टू 2 या को आनी एथरे सब्स्टिट्यूट कर दो। सो फॉर B solving 2 and 3 simultaneously. Equation 2 and 3 simultaneously. That is, तो कौन करियो हमें for B solving 2 and 3 simultaneously. That is 2 टा कोन 2 टा देखि दबा हम ठीक 2 इक्वेशन टा कोन थिला 2 टा थिला x1 is equal to 2 and 3 टा थिला x1 plus x2 equal to 3। तो x1 equal to 2
and x1 plus x2 this is equal to 3 x1 को 2 substitute कर देले 2 plus x2 equal to 3 हेगला तो x2 will be equal to 3 minus 2 and 3 minus 2 will be equal to 1 तो जो b वाला पॉइंट अच्छी b वाला पॉइंट आएगा 2, 1 and आउट पॉइंट अच्छी for c solving 1 and 3 for 1 and 3 simultaneously. Solving 1 and 3 simultaneously. Equation 1 का देखो कौन अच्छी minus 2x1 plus x2 equal to 1. Minus 2x1 plus x2 is equal to 1. And the third equation is x1 plus x2 is equal to 3. Minus minus minus. So x2 cancel होगा. Minus 2x1 minus x1 is equal to minus 3x1. 1 minus 3 will be equal to minus 2. Minus minus cancel. So x1 is equal to 2 by 3. x1 equal to 2 by 3. Now using x1 in 3. 80 कर दूंगा हाँ तो this is 2 by 3 plus x2 is equal to 3 तो x2 is equal to 3 minus 2 by 3 तो 9 minus 2 will be equal to 7 by 3 so coordinate of c is 2 by 3 comma 7 by 3 now एबे कौन करिया सब पॉइंट मिलेगा z फाइंड करिया since z is equal to z कौन फिर देखि दिया था 3x1 plus 2x2 z equal to 3x1 plus 2x2 तो z at a रो कोऑर्डिनेट कते अछि a रो कोऑर्डिनेट थिला 2, 0 a रो कोऑर्डिनेट थिला 2, 0 is 3 into 2 plus 2 into 0 3 into 2 will be 6 2 into 0 will be 0 so 6 plus 0 होगा 0 similarly z at b and b is 2, 1 therefore z is equal to 3 into 2 plus 2 into 1 3 into 2 will be 6 3 into 2 will be 6 6 plus 2 will be equal to 8 similarly z at c and what is c c equal to 2 by 3, 7 by 3 2 by 3, 7 by 3 so therefore z is equal to 3 into x1 will be 2 by 3 plus 2 into x2 will be 7 by 3 3 into 2 will be 6 7 into 2 will be 14 by 3 so 20 upon 3 20 upon 3 20 upon 3 मतलब 6.6 around something then z at d माने केते थिला d कोऑर्डिनेट 0, 1 0, 1 therefore z is equal to 3 into 0 plus 2 into 1 so 0 plus 2 will be equal to 2 तो z रो कोन वैल्यू दरकार देखो z रो मैक्सिमम वैल्यू दरकार मैक्सिमम वैल्यू देखो गोटे वैल्यू हो गला 6 आ गोटे वैल्यू हो गला 8 आ गोटे वैल्यू हो गला अराउंड 6.6 और 20 अपन का 2 तो मैक्सिमम टाइटा तो z maximum is equal to 8 at x1 is equal to 2 and x2 is equal to 1 this is your answer बुझेला प्ले हेला तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 and 5 we have done नेक्स्ट लेक्चर आम कौन करवा या नेक्स्ट वीडियो आम क्वेश्चन नंबर 6 टू आम स्टार्ट करवा ठीक अच्छे जब चैनल नुआ अच्छे चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर जे वीडियो टाक भल भाव देखु जो चैप्टर अच्छी यही चैप्टर जे वीडियो रही बाकी रिमेनिंग चैप्टर गुड़ा 2019 20 और 21 आम जे वीडियो अपलोड कर देखु सो दैट एग्जाम खत्म होला पर पैनिक सिचुएशन रही जेई एबेठू टिके प्रैक्टिस कर चलिए ठीक है मिसवा नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन नंबर 6 टू आगु सॉल्व करिया until then